Exercise 67. Oxford Junior English Translation. Here's the difference between I am to go and I am about to go. I am to go. Meaning, this implies that it is decided or scheduled for you to go. It sounds formal and is often used in written or official contexts. हिंदी मुझे जाना है पता मेरे जाने का तय हुआ है. Example. I am to go to Delhi tomorrow. मुझे कल दिल्ली जाना है. I am about to go. Meaning, this means you are just on the point of going in a few moments. It is used in spoken English and refers to the immediate future. हिंदी मैं बस जाने ही वाला हूँ. Example. I am about to go. Can we talk later? मैं बस जाने ही वाला हूँ. क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? Summary. I am to go equals it's scheduled/decided. I am about to go equals you're leaving very soon. Please comment, share and subscribe. मैं जाने वाला हूँ. I am to go. मैं खाने को हूँ. I am to eat. मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ. I am to buy a car. हम लोग यह काम करने को हैं. We are to do this work. हम लोग शादी करने वाले हैं. We are to get married. वह आने को है. He is to come. रीना गाने वाली है. Rina is to sing. तुम लोग मैच खेलने वाले हो. You all are to play a match. बच्चा रोने को है. The child is to cry. आप त्याग पत्र देने वाले हैं. You are to resign. वर्षा होने वाली है. It is to rain. वे लोग गाने वाले हैं. They are to sing. वह आने वाली है. She is to come. गाड़ी खुलने को है. The train is to depart. राम और श्याम जाने को हैं. Ram and Shyam are to go. वे लोग दिल्ली जाने वाले हैं. They are to go to Delhi. मेरा भाई आने वाला है. My brother is to come. मेरे भाई लोग आने वाले हैं. My brothers are to come. वे बनने गाने वाले हैं. They are to sing wedding songs. उसकी बहनें गाने को हैं. Her sisters are to sing.